Okay, in the last lecture, we have gone through the differences between data, information, and knowledge, right? So let's first share my screen. Okay, so I hope you can see my screen now. So you see that the definition of data as a collection of independent and unorganized facts, information as the process and organized data presented in a meaningful form. And when we go for actually processing this data to convert it into an information, then that process is known as data processing. I hope after this everything clear to you, right? Hello. Yes, sir. Yes. Okay. So Yes, sir. you have seen that for this processing tasks, what we need is a computer. So this the normal definition says that this computer is an electronic machine that follows a set of instructions in order that it may be able to accept and gather data and transform this into information. So यहाँ क्या है देखो सब लोग अपना अपना डेफिनेशन देते हैं मैं अपना डेफिनेशन ये बोल रहा हूँ डेफिनेशन में ये बोल रहा हूँ कि जब आपके पास डेटा है आप डेटा को कैसे डिफाइन कर रहे हो रॉ फैक्ट आपने मोबाइल से फोटो खींचा या तो आप कुछ भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो दोज आर डेटा बिकॉज दे आर रॉ फैक्ट्स बट आप उसको एक ऑर्गेनाइज वे में ले आओगे मतलब उसको प्रोसेस करोगे तब जाके वो क्या क्या होगा आपका इंफॉर्मेशन और वो प्रोसेस के लिए जिसको हम बोलते हैं क्या डाटा प्रोसेसिंग okay or sometimes we also call it as information processing for that what we need an electronic machine that is known as computer okay that is the definition or I can say the better definition of computer see এতিয়া তোমালোকে এই ডায়াগ্রামটো ভালকে চোৱা এই ডায়াগ্রাম आपको दिखाई दे रहा होगा I hope this diagram is visible to you Yes, sir. It's visible. Yes, sir. आप लोगों को लग रहा होगा कि सब सिंपल सा फैक्ट है पर नहीं कभी कभी एग्जाम में इसी चीज को इस टाइप से पूछ देंगे अगर डिटेल्स आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया नहीं हो तो आप नहीं जवाब दे पाओगे देखो ये दिख रहा है आपको रॉ फैक्ट्स वो इंसान ने हाथ से पकड़ के रखा है कुछ कॉपीज कुछ पेपर्स दे आर आवर डेटा राइट अब उस चीज को मैंने क्या किया प्रोसेस किया विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर when we process this, now we have converted this into a form that will actually imply something or something valuable to you. Suppose you have a company, you want to find out that how much of your means revenue or your capital being invested in which field or in which particular vertical. See, ये जो डेटा था इसको जब हमने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद ये मिल रहा है इस डायग्राम को क्या बोलते हैं आई होप यू ऑल नो ठीक है दिस ब्लू वन हैज दिस कलर एंड दिस रेडियो केबल टीवी सो जब ये डेटा था हमें तब ये आइडिया नहीं था कि किस एरिया में कितना परसेंटेज हम अपना रेवेन्यू स्पेंड कर रहे हैं अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जब हमने उसको प्रोसेस किया इंफॉर्मेशन बनाया तब आपको समझ में आ रहा है कि टीवी सिग्मा में कितना लग रहा है आपका 67%, प्रिंट में 3%, रेडियो में 9%, केबल टीवी में 21%. नाउ आई कैन से दैट these things are information to us. Okay, and this is our data, and we have converted this data into information with the help of our processing system. That processing system is an electronic device which is popularly known as computer. Okay. So, what are the functions of an information processing system? First, it accepts and gathers data. क्योंकि input, I hope this term is clear, means you already know. हमें पहले कुछ डेटा क्या करना पड़ता है इनपुट करना पड़ता है इनपुट करने का मतलब ये होता है वो डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने सिस्टम को चाहे आपका वो नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर हो आपका
ना mobile ho या तो कोई suppose super computer ho, doesn't matter. You have to provide some data, and that is known as input. Then it processes data to become or to make it information, right? And that is processing. Then it stores data and information. The आपने process कर लिया, you have to store it somewhere, so that is your store. Okay, then from there you will show the output to your user. That is, you are presenting that information. So these are the functions of an information system. So first, it accepts and gather data, that is input. It processes data to make it information, processing, and then it stores data somewhere, stores data and information somewhere. Okay, that is your store, and it presents information, that is output. See, this part you already, you will, or if you have not already gone through, but you will be assigned, you will be given some practical, okay, in your lab, that you have been provided some data. You need to find out that what percentage of that particular column or that particular area is being consuming from the total, that you can easily do with the help of Excel. ओके, अब एक्सेल का जो हम ओपन वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है, तो ओपनवेयर में हम उसको गूगल शीट के जरिए देखेंगे, जो आपको आपका लैब में दिखाया दिया जाएगा और आप लोग भी उसी से करोगे, ठीक है. So I hope the functions are clear to you. Now, what are the major components of an information processing system? एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का मेजर कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है, ये टर्म थोड़ा सा याद रखना. फर्स्ट हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड पीपलवेयर. क्या क्या मैंने बोला, की कॉलम है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपलवेयर. हार्डवेयर, यहाँ जो वर्ड यूज कर रहा हूँ हार्ड, because you can task that, you can manufacture that, right? एक वर्ड में यूज किया हूँ मैन्युफैक्चर. Do remember there exist differences between two words, manufacturing and developing. ठीक है, ये दोनों वर्ड में मैन्युफैक्चर और डेवलप, ये दोनों वर्ड में कुछ डिफरेंसेस हैं. अब हार्डवेयर के केस में मैं यूज क्या, कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, जल्दी बताओ. व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग फॉर हार्डवेयर? Sir, manufacturing. टू Star मैन, manufacturing. ओके, गुड. You may note it, you have to the hardware we manufacture actually, because this is the tangible part of a computer system. आप नेक्स्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये टेंजिबल पार्ट क्या है, ये टेंजिबल पार्ट माने की বস্তু, राइट? सो টেঞ্জিবল পাৰ্ট মানে সেইটো বস্তু যিটো তুমি চুব পাৰা, যিটো তুমি অনুভৱ কৰিব পাৰা. टेंजिबल पार्ट वो चीज होता है जिसको आप फील कर सकते हो, आप टास्क कर सकते हो, हाँ आपके सामने है वो चीज, ठीक है, आप उठा सकते हो, ठीक है, उठा के आप कहीं इधर उधर मूव कर सकते हो, दैट इज द टेंजिबल पार्ट. और ये है हमारा हार्डवेयर. तो फिल इन द ब्लैंक में एमसीक्यू में आ सकता है आपका कि हार्डवेयर इज फिल इन द ब्लैंक पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. ऑप्शन दे दिया टेंजिबल, इंटेंजिबल. तो आंसर विल बी टेंजिबल, राइट? गॉट इट? बुझी पाइছা? कुछ Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं है? Yes, sir. No. ठीक है, तो हार्डवेयर टेंजिबल पार्ट है. अब सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर इज नॉन टेंजिबल और इंटेंजिबल पार्ट. क्योंकि अब सॉफ्टवेयर का देखो, एक प्रोग्राम आप मैंने बना लिया प्रोग्राम एक, ठीक है, आप लोग जब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे या तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी है, तो आपको मैंने बोल दिया कि एक प्रोग्राम बनाओ जिससे स्क्वायर रूट निकाला है, एक कोई भी एक एरिया में नंबर इनपुट कर रहा हूँ, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बना के दो. आपने प्रोग्राम बना के मुझे दे दिया. क्या मैं उस प्रोग्राम को उठा के अपने हाथ से मुट्ठी में पकड़ के, मुट्ठी से पकड़ के कहीं और जगह पे रख सकता हूँ? बोलो जल्दी. उसी पैसा की कोई ऐसा, क्या No. मैं बोलना चाह रहा, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, Can I sir. pass and grabs that program and move it to somewhere else with my hand, with my palm? No, sir. No. No, No, sir. sir. So that, because that is non-tangible or intangible. Non-tangible means you cannot task that actually. Okay. Software is the non-tangible part that tells the computer how to do its job. तो मेन पार्ट हार्डवेयर तो ठीक है, हार्डवेयर तो सही है, है ना?
और आप अपने बॉडी को रिकॉग्नाइज करो, आपके बॉडी है ठीक है, बट हाथ है, पैर है, बट जब तक आपके पास दिमाग नहीं होगा, आपके पास ब्रेन नहीं, आपका न्यूरन सपोज डायरेक्ट काम नहीं कर रहे, तो आपका ये होने से ना होने बराबर एक ही चीज है, क्योंकि आपको जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा कि किस समय क्या करना है, तब आप कुछ नहीं करो, यू बिकम आइडल। सिमिलरली सॉफ्टवेयर ही वो पार्ट है जो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट देते हैं कि क्या करना है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, इस चीज के लिए क्या चीज करना है, इस टाइप का इंफॉर्मेशन एक्चुअली द सॉफ्टवेयर gives to us. So software is the non-tangible part that tells the computer how to do its job. I hope this hardware definition and software definition is clear to you. Okay, Yes, then sir. I thank you. So then I come to the peopleware. So what is peopleware? See, you have seen hardware, you have seen software, and peopleware means you, me, like that, those who are using and operating the computer system. Right now I am delivering a lecture to you, I'm some presenting some slides to you. That is me who is operating these things with the help of the processor, right? With the help of my PC. So people will refers to all those who are using and operating the computer system. Okay, write the computer programs and analyze and design the information system. Okay, so this is hardware, software, and peopleware. If this is clear, then I will move to the next part. So moving to the next part, basic units of measurement. ठीक है, कोई भी चीज को मापने के लिए कुछ तो चाहिए ना। তোমালোকে দগা পাল্লা বুজি পোৱা, তোমালোকে सपोज आलू किनिবলৈ গৈছা 1 केजी 2 केजी, राइट? आप लोग जब कुछ खरीदने जाते हो क्या करते हो, यूजुअली आपकी मम्मी बोलेंगे कि हाफ किलो ये ले आओ, हाफ किलो टमाटर ले आओ, राइट? तो सभी चीजों में हम क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट का यूनिट यूज करते हैं, ठीक है? सिमिलरली in our digital world also, in our computer system also, we use some measurement units. And in the case of digital information system, we actually refer it with the help of bit, byte. Nowadays we have very big means you can say that petabyte, then gigabyte we frequently use that, but now we move to the terabyte like that. But basically we have some fundamental units like bit. And what is bit? Bit is a unit of information equivalent to the result of choice between only two possible alternatives in the binary number system. I hope you have a paper, computer organization or digital इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोगों का है ये पेपर इस बार? अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वहां पे आप नंबर सिस्टम, क्योंकि आप जानते हो डेसिबल नंबर सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, 0 to 9, but in our digital system we use binary system maximum times, and binary system means two, only two options are there, 0 or 1। ठीक है, दो ही ऑल्टरनेटिव आपके पास हो सकता है, क्या क्या है वो, 0 या तो 1। आप बीट क्या कर सकते हैं, बीट इज ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट ऑफ अ चॉइस बिटवीन ओनली टू possible alternatives, either 0 or 1। Is this bit clear to you? Then I come to byte. Byte is what? If we have a sequence of 8 bytes, okay, enough to represent one character of alphanumeric data process as a single unit. So अगर आपके पास 8 बिट है, 8 बिट का सीक्वेंस है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, बाइट। सो 1 byte is equal to how many bits? Quickly answer this question. 1 byte is equal to, 8 bit. 8 bits. 8 bit. very good, 8 bit. okay, 8 bits. Why? Because this much of space we actually need to represent one character at least. Okay, so bit and byte. Now, a byte can be used to represent a single character, ये तो आपने देख लिया,
And that character may be either letter or number or special character or symbol or space, like that. Letter, you all know what is letter A to Z. Number 0 to 9. Special character, those star, underscore, like that. Space, you all know what is space. Okay, space bar, space bar. So that is what actually we mean by a single character. Okay. Now look at this diagram. यहाँ मैं एक 1 बाइट ऑफ बाइनरी कोड आपके सामने रखा हूँ. 1 0 0 0 1 1. कितना बिट्स है यहाँ पे? 1 2 3 4. 1 2 3 4 मतलब कितना बिट्स है यहाँ? You have 8 bits, right? And 8 bits means what? 1 byte. 1 byte, sir. ठीक है. अब ये सब आप मैं उसके डेफ में नहीं जाऊंगा because this is a part of your paper digital electronics that will be taken by someone else. कोई और आपको वो पढ़ाएगा या पढ़ा रहे होंगे. तो वही सब चीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, गेट्स, ये सब आपको आपको मिल जाएगा. फ्लिप फ्लॉप क्या है, गेट्स क्या है, ठीक है. तो कंप्यूटर तो सिर्फ यही समझेंगे, क्या समझेंगे, आइदर 0 और 1. जब हम उसको हमारा जो और मीडियम है उसमें ट्रांसफर करेंगे तो दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सम signals. Okay, electrical signals. So you see, this is your monitor, this is your keyboard, and this is the CPU who is actually doing these things. CPU is the brain of the computer, right? जैसे कि मैं बोलूँ तुम लोगों को, जैसे मैंने कहा आप लोगों को अभी के जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स वगैरह हैं, यही सब क्या है? Because of those, actually we perform something that is means result of, or that is or I can say that that is with respect to some particular conditions. Okay, so based on some condition we perform something. कंप्यूटर की भाषा में तो हम ऐसे ही बोलेंगे, राइट? तो इसी तरह आपको जब कुछ इंस्ट्रक्शन मिला है, उस इंस्ट्रक्शन के लिए आप कुछ परफॉर्म करोगे, तो वो एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इनपुट लेके, ठीक है, वो कौन कर रहा है? आपका सीपीयू. तो कीबोर्ड के जरिए, कीबोर्ड इज ए हार्डवेयर डिवाइस, यू नो. तब यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ आ रहा है? आपका सीपीयू में, और वो प्रेजेंट हो रहा है आपका आउटपुट. सीपीयू प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट है वो प्रोसेसिंग आउटपुट मॉनिटर में दिखाई दे रहा है, राइट? दैट इज हाउ एक्चुअली ए कंप्यूटर वर्क्स. सो आई होप दिस बिट्स एंड बाइट concept is clear to you. Now let's come to some other units of measurement. I told you bit, I told you byte, but we have megabyte, kilobyte, gigabyte, terabyte, and nowadays lot of different bytes are there. Okay, 1000 bytes, 1 kilobyte, जिसको हम normally 1 KB भी बोलते हैं, 1 KB बोलते हैं. 1000 kilobyte is equal to 1 megabyte. ठीक है. 1000 megabyte is equal to 1 gigabyte, and 1000 gigabyte is equal to 1 terabyte. आप लोग जब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीदने जाते हो तो बोलते होंगे ना 2 terabyte का सही है, ऐसा बोलते हो कि नहीं? ठीक है. तो वो क्या है आपका? 1000 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 terabyte. आप मुझे कोई जल्दी से बताओ कितना बाइट्स मिलके 1 मेगाबाइट होता है? हाउ मेनी बाइट्स एक्चुअली फॉर्म 1 मेगाबाइट? प्लीज रेस्पॉन्ड इट. जरूर मत घबराओ नहीं, जो भी आपको आ रहा है बोल सकते हो, ठीक है. মই কি সুধিছো যে কিমান বাইটছ লগ লাগি 1 মেগাবাইট হয়? Okay, how many bytes form 1 megabyte? Sir, 1 lakh bytes. 1 lakh byte. How you got it? Sir, 1000 bytes into 1000 another bytes into करके. Right. See, देखो कैसे कर रहे हो आप. पहली तो बात 1000 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, ये आपको पता है ना? Yes, sir. ठीक है. 1000 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट. इस सेकेंड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है. मेरा माउस का कर्सर सबको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. दिखाई दे रहा है. तो 1000 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट. अब 1 किलोबाइट में कितना है? 1000 बाइट्स. तो 1000 किलोबाइट में क्या होगा? 1000 इंटू 1000 बाइट होगा, क्योंकि 1000 बाइट 1 किलोबाइट में होता है. तो 1 किलोबाइट में 1000 बाइट है.
अब कितना किलोबाइट है यहाँ पे? 1000 किलोबाइट है। तो 1000 into 1000 बाइट means 10 to the power how much? 6, right or no? 6 sir. 3 6 sir. into 3 6। अब आपको पता है कि जब 1 लाख में कितने जीरो आता है? 1 lakh is equal to 1 0 0 0 0 0। 5 आते हैं कि नहीं 1 के बाद? Yes sir. अब 10 यहाँ lakhs कितना आ by. गया? 6, यहाँ पे 6 आ गया। 1 Yes. 0 0 0 0। तो मैं इसको 10 करके अगर लिखूंगा 10 इंटू 1 लाख लिख सकता हूँ। Yes sir. मतलब कितने लाख हो जाएगा यहाँ पे? Sir 10 lakhs. राइट, दैट इज। और एक नाम है मिलियन एंड बिलियन। आप लोगों के लिए पहला ये असाइनमेंट ये है कि यू विल टेल मी थ्रू कमेंट दैट 1 मिलियन, ओके, 1 मिलियन बाइट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगाबाइट्स। ये पहला क्वेश्चन आज का है जो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आप बाकी चीज भी ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। एग्जाम में दे सकते हैं कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मच बाइट्स। तो कैसे करना है, अब ये वाला एग्जाम्पल से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे आपको वो निकालना है, राइट। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। Yes sir. ओके, गुड। नाउ बेसिक पीसी हार्डवेयर, जैसे मैंने कहा हार्डवेयर इज द टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये टेंजिबल वर्ड सबको आ गया है, मैं जानता हूँ सबको समझ में आ गया है। तो आपका ये पार्टिकुलर डायग्राम देखो, क्या दिखाई दे रहा है? ये एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, पर्सनल सिस्टम, ठीक है। ये स्क्रीन है, मॉनिटर है, स्पीकर है, माउस है, माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, ठीक है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब जो चीज है किस में आ रहा है? आपका हार्डवेयर में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक हार्डवेयर क्वेश्चन में पूछ दिया कि क्या क्या है। तो ऐसे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो पूछेंगे नहीं। हाँ, ऐसे पूछ सकते हैं कि कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है? कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है, कोई बोल सकता है मुझे? Sir कीबोर्ड it's an इनपुट input डिवाइस। device. वेरी Input गुड, device. इनपुट डिवाइस, ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। इसी तरह मैं अगर आपको पूछ दिया माउस, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस माउस इज? Sir इनपुट it's और also आउटपुट। an input device. Input device. मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगा, सभी लोग इसको सोचोगे और मुझे बताओगे व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस माउस इज। इसी तरह आपका जो स्क्रीन मॉनिटर है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर है। आप माइक्रोफोन कोई बता सकते हैं किस टाइप का डिवाइस है? Sir input device. ओके, क्यों लगा ऐसा कि ये इनपुट है? Sir speaker is output. Speaker gives output and microphone takes in. ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आप ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप बोल देंगे कभी आपको कि ये पर्टिकुलर डिवाइस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच वन इज। ओके, क्वेश्चन ये है कि माउस इनपुट है या आउटपुट है, एक बार देखोगे और बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन सबको आ गया था, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा। आ जाते हैं हम बेसिक हार्डवेयर पार्ट, जैसे आपका क्या क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, that is known as brain of a computer, CPU. Then memory unit, input devices, output devices, and secondary storage devices. These are the basic components or basic hardware components of a PC system. ठीक है, तो come to the first one, basic, that is central processing unit. This is known as brain of the computer, right? ये ब्रेन है क्योंकि मैंने कहा ना, आपके पास चाहे आप जितना भी क्यों ना ये क्यों ना हो, आपके पास बहुत पावर है, ये है, जब तक आपके पास प्रॉपरली सोचने का ये नहीं रहेगा, तो ब्रेन नहीं है आपके पास, देन यू कैन डू एनीथिंग विद दैट बिग हैंड्स और लेग्स, राइट। सो सिमिलरली इन केस ऑफ ए कंप्यूटर है, आपके पास मॉनिटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चाहिए, कीबोर्ड है, बट जब तक प्रोसेसर में कुछ दम नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, वी ट्राई टू
upgrade this one. Okay, central processing unit, that is known as brain of the computer. It directs and controls the entire computer system and performs all arithmetic and logical operations. All arithmetic and logical. Don't mix it up. Okay, arithmetic operations are different and logical operations are different. Then memory unit, we have read-only memory, that is ROM, and we have random access memory, that is RAM. The read-only memory contains the pre-programmed computer instructions such as the basic input-output system or BIOS. ठीक है, हर एक जन, all of you, note down this term BIOS, BIOS. ठीक है. Then random access memory is used to store the programs and run that that will run exists only when there is a power. तो ROM जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ प्री प्रोग्राम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रखे, और रैम ये कब, जब exists only when there is power. Now this actually raises, or I can say this actually sometimes questions asked with respect to two terms, volatile or non-volatile. ठीक है. अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि which one among read means ROM and RAM is volatile by nature. रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन दोनों में से कौन सा volatile नेचर का है, कोई बता सकते हैं मुझे? If you know the term what does the volatile means, then you can answer this. Sir, what is the meaning of volatile? That's why I'm asking. कोई बात नहीं, थोड़ा सोचो. देखो मैं यहाँ क्या बोला हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी that needs or that exists only when there is power. ठीक है, मतलब ये है volatile का. volatile एंड नॉन volatile को जो पहले, रैम जो है तभी एग्जिस्ट करता है आपका जब पावर हो. अगर पावर नहीं है तो मतलब वो डाटा भी नहीं, वो डाटा गायब, राइट. सपोज आज एक मूवी आपने स्टोर करके रखा है, सोचा कि ये शाम को आप देखोगे, ठीक है. आप, ठीक है, लाइट था जब आपने सेव किया था. सपोज आपका पेन ड्राइव तो सभी लोगों ने सुना ही होगा, राइट. सुना है कि नहीं? Yes, sir. तो एक मूवी आपके फ्रेंड के यहाँ से आपने ला के स्टोर करके रखा है, ठीक है. तो लाइट चली गई और वो मूवी गायब, पेन ड्राइव में से गायब. क्या ऐसा होता है? No, sir. नो ना. तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ जो पेन ड्राइव है दैट इज नॉट रैम. क्योंकि रैम क्या है, रैम, डाटा इन रैम एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज पावर. जब पावर नहीं है तो वो डाटा भी गायब. बट रोम वो है जहाँ पे आप सोर्स रख सकते हो, कभी तक जब भी यूज करना है तब यूज कर सकते हो. वो लाइट चली जाने से क्या होगा, गायब नहीं हो जाएगा, मतलब ये राफ नहीं हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है volatile. You may write it down, or you will get the video later, and you can write it from that video also. So volatile memory is that memory which needs power to maintain the stored information. This means when power is interrupted, the stored data will also going to be lost. ठीक है. मतलब volatile memory वो memory है जो जिसको जिसमें अगर कुछ डाटा रखा है उसको मेंटेन करने के लिए पावर और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. अगर आपका पावर इंटरप्ट आ गया, मतलब पावर चली गई, लाइन कट हो गई, तो आपका डाटा भी गायब हो जाएगा, मतलब डाटा भी लॉस्ट हो जाएगा. उसी टाइप का मेमोरी जहाँ पावर की जरूरत पड़ती है डाटा को और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए, उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी. ठीक है, डेफिनेशन आ गया समझ में. रिपीटिंग इट अगेन. Volatile is that type of computer memory which requires power to maintain its stored information. Okay, it retains those information only when the power is there. If the power gone, then the information, that stored information, will also be lost. And such example is what? Now you tell me, among the ROM and RAM, which one will be the volatile memory? बता सकते हो आप?
Sir, RAM is volatile and ROM is not volatile. Okay. What about the others? Yes, sir. RAM is volatile, ROM is non-volatile. Sir, RAM is volatile. ओके, ठीक है, 3 जन ने तो जवाब दे दिया, बाकी लोग क्या बोलते हो भाई, कौन सा होगा? Right, you are right, of course. This RAM is volatile and ROM is non-volatile. Right. Now, is this clear to everyone? Yes, ठीक sir. है, clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So data sources, documents, programs are transferred from the hard drive to our RAM. New data are sent from memory to the screen, like that. So we need RAM to perform some critical operations. Now, if this memory portion is clear, then we come to the input devices, and you know the input devices are keyboard. Don't see the second one because I have asked the question. Okay, no problem. Joystick, microphone, webcam, scanner, monitor, all these are your input device. ठीक है, जॉयस्टिक के बारे में पता है क्या होता है जॉयस्टिक? Yes, sir. क्या है ये जॉयस्टिक? Sir, input devices are pointer type. अच्छा, गेमिंग में शायद आप लोगों ने यूज भी किया होगा, है ना? Yes, sir. टू मेक सब। Yes, ओके, sir. ठीक है, ठीक है। मैं किसको पूछ रहा हूँ यार, आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स हो आप लोग, बहुत अच्छे से आते होंगे आप लोगों को, है ना, जॉयस्टिक वगैरह। ठीक है, माइक्रोफोन आप समझ में आ गया, किसी एक जन ने बोला ही था आप लोगों के बीच में से, क्योंकि साउंड को आप क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, साउंड वेव को इनपुट कर रहे हो। वेब कैम, कैमरा, राइट, स्कैनर, मॉनिटर, ऑल दीज आर इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं, ये कीबोर्ड है हमारा। ठीक है, कीबोर्ड शिप ऐसा मत समझना कि कीबोर्ड शिप्स कंप्यूटर में है, आपके पास भी आपका ये वाला कीबोर्ड है। ठीक है, so that is traditional keyboards, flexible keyboards, ठीक है, ergonomic keyboard, wireless keyboards, PDA keyboards. Now third one, do you have any idea what is this third one is? थर्ड वन ergonomic keyboard क्या होता है? Sir, for comfortable use, sir. Okay, any particular feature of this? ये फ्लेक्सिबल है, राइट, ठीक है, दिस इज फ्लेक्स। आप मेरे पास डायग्राम होता तो मैं आपको दिखाई देता। ठीक है, तो दिस ए काइंड ऑफ सम फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। ठीक है, देन पीडीए, पीडीए कीवर्ड मतलब क्या होता है आपका? आई एम जस्ट आस्किंग, ओके, व्हाट इज पीडीए कीबोर्ड? एनीवन हर्ड दिस? Okay, you just tell me what does the full form or what is the full form of PDA? Have you heard personal digital assistant, or have you heard the term portable? Yes, sir. I have heard about PDA. Okay, then I think no need to explain that. This is, it means what you can say. This has some size, big size, and this palm strength means this is flexible. Wireless means you don't need to just use this wired one. You can just run it with the help of Bluetooth, right? Then you have smaller size portable one also, that is PDA keyboards. Okay, so these are the different types of keyboards, and you have seen that keyboard is what? A kind of input device. Now, similarly, we have mouse.
So माउस भी आपका दो है, पहले जो आजकल तो 80% we use this one, that is optical. Yeah, initially or earlier we used this one, mechanical one, a type of computer mouse that has a rubber or metal ball on its underside and it can roll in every direction. Know that. But nowadays we use actually what which one? Optical one. Okay, this type uses laser. Okay, laser for movement. Is it clear? Have you heard that or not before? Yes, sir. Optical one. I hope that nowadays you are also using this one. Yes, sir. So then these are the different devices and that we use for inputting, or you can say that we have to use to input some data. So better you have to collect some figures with respect to each of these, like trackball, touchpad, touch screen. Okay, then it will be better for you to understand or have an idea about that. And joystick, this one, light pen, na, can directly write this with this. Okay, stylus pen like device commonly used with tables and personal digital assistants like PCs and PDS. Okay, तो आप लोगों के लिए एक ये है टैप, आपने सुना ही होगा, सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. वो किस Yes, टाइप sir. का, क्या है वो? This tab is a PDA. Tab stands for tablet. I hope you all know. Okay, तो Yes, sir. सेकेंड आप सभी लोग सोचोगे कि टैबलेट क्या है, टैब क्या है, ठीक है? देन स्कैनिंग डिवाइसेस, स्कैनिंग आज एग्जाम में भी हम क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं आंसर शीट में जो अभी का रूल है, अकॉर्डिंग टू टुडेज rule, we need to scan our handwritten answer script, we convert it to PDF. So scanning means what? We need to input those images, right? So that's why we need some scanning devices. Okay, cameras, video cameras, these all are input devices. Then output devices, we have monitors, audio speakers, printers. Okay, monitor भी आपका अलग अलग है, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। आजकल तो ये वाला शायद ही यूज करते होंगे, कोई किसी के घर में है ऊपर वाला जो दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. हैं? वाह, हाँ सर. वेरी गुड। ठीक है, रखना चाहिए, एक तो रखना चाहिए। तभी एक समय ऐसा होता है कि हम जो कलेक्ट करके रखते हैं उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है हमारे। तो पहले हम यही यूज करते थे, आजकल भी जैसे हमारे घर में भी शायद एक रखा होगा, तो मैक्सिमम टाइम्स we use this one. Okay, LCD or LED. Then we have printers. Impact printers uses pressure by physically striking the paper. Okay, daisy, wheel printers, line printers, dot matrix printers. ये सब भी अभी outdated type का हो गया है. Non-impact printer does not apply pressure on the paper, but instead produces a character by using lasers, ink spray, photography और heat जो आजकल हम use करते हैं. ठीक है. So these are the printers. Then secondary storage devices attached to the computer system to allow you to store programs and data permanently for the purpose of retrieving them for future use. जैसे मैंने आपको कहा कि आपने पेन ड्राइव में आपने क्या किया, एक मूवी कलेक्ट करके लाया, फ्यूचर इसके लिए आप फ्यूचर में देखोगे। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रैम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो वोलाटाइल नेचर का है या नहीं, ये बताओ जल्दी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल? Sir, non-volatile. Very good, not volatile. Because if it is volatile, then no meaning of storing the data in it, right? So फ्लॉपी डिस्क आप लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा फ्लॉपी डिस्क क्या है। ठीक है, पहले फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, राइट? दिस कम्स अंडर सीडी रोम भी शायद ही आजकल बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फिर भी है। फ्लॉपी डिस्क तो ना के बराबर है, ठीक है।
floppy disks, hard disks, CD-ROM, these are the secondary storage devices. Floppy disk का sizes हुआ करता था, like this one. The most common secondary storage device earlier we have floppy disks, 3.5 inch disks, 1.44 MB. Now high capacity floppy disks are also there. Okay, floppy disk cartridges 3.5 inches in diameter, stores more information, more than this one, 1.4 MB. Okay, then hard disk तो चाहिए made of rigid materials unlike floppy disks holds a greater amount of it. अब ये जो है आपको दिखाई दे रहा है hard disk is very important part of your paper operating system. Operating system में हमके आपके पास आपका एक पेपर है. I don't know that is this time we have operating system or not. इस time में है कि आप लोगों के पास ये पेपर. Do you have the paper operating system in this system in this semester? Yes or no? Sir, I cannot hear you properly, sir. Do you have the paper operating system this semester? In this semester? Sir, I don't know, sir. आई थिंक नहीं है, शायद होगा भी सर. तो वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट एक यूनिट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन देयर यू नीड टू नो अबाउट दिस हार्ड ड्राइव इन डिटेल्स लाइक सेक्टर्स, ट्रैक. ओके, ये सब चीजों के बारे में आपको जानना होगा और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा. तो सभी जन को बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन. इफ यू हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर एंड देन डोंट स्किप दैट पार्ट फॉर मेमोरी मैनेजमेंट. ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन गेट में भी उससे आते हैं आपका. ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, सेक्टर एंड ट्रैक का कॉन्सेप्ट और कैसे आप निकालोगे कितना मेमोरी यूज हुआ, कितना मेमोरी ये है, तो वो पढ़ लेना अच्छे से. ओके, then optical disc is standard part of the modern desktop machines, especially used for multimedia purposes, preferred in loading applications. Okay, nowadays we use Blu-ray discs. Okay, Blu-ray discs space size is very large, like 40 GB. Then we also use this one DVD-R. DVD-RW means rewritable, means आप एक बार स्टोर करके उसको फिर से इरेज करके कुछ और भी वहां रख सकते हो. ठीक है, सिंगल लेयर, डबल लेयर. सिंगल लेयर मीन्स एक साइड और डबल लेयर मतलब दोनों साइड आप रख सकते हो. ठीक है, पहले होता था कॉम्पैक्ट डिस्क, अभी भी है बट बहुत कम लोग यूज करते हैं. CDR राइट वन 650 MB का होता है जनरली. CD रीराइटेबल 700 MB का है. मेरा वॉइस तो सुनाई दे रहा है ना सबको? माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं दैट इज ब्लू रे डिस्क. ओके, सो to read those tricks, we have CD-ROM. Okay, then CD writer, DVD combo, DVD writer. Okay, then some these things. I hope you all know that this we use as some external card. Okay, this is pen drive and USB flash drives. These are also part of secondary storage. Okay, so parts that build up a system unit: caching or cover, sound card, power supply, floppy disk drive, motherboard, hard disk drive, microprocessor, CD-ROM drive, memory, modem, video card, ये सब मिलके आपका एक सिस्टम बनते हैं, राइट? तो ये है आपका कवर, जो बॉक्स की बात कर रहे हो हम, जहाँ हम अपना CPU और प्रोसेसर रखते हैं, राइट? It protects the computer circuits and coolings and system organization. Then power supply, we need it, responsible for powering every device in your systems. Then motherboard, very important, the physical arrangement in a computer that contains the computer's basic circuitry and components. So my motherboard में क्या क्या है? If someone asks you, then of course we have our processor there. Okay, co-processor, memory, BIOS, extension slot, interconnecting circuitry. These are the components of your motherboard. This is the diagram of a simple motherboard. Okay. So extension slot, you will see extension slots means something extra you may assemble, like graphic card if you are very interested on high level games.
graphic games, then you have to install some graphic cards, sound cards, modem cards, network interface cards, or network adapters. It is mandatory because if you go for connecting the LAN, then of course you need this interface card. Okay, so these, I think these are sufficient for today's class, and we have gone through the different devices of hardware and the memory devices. Okay, and we have also seen that different memory measurement units are there, right? So go through the class once again if you miss something. And I have asked two questions right now, and last question I want to ask you, please listen carefully. You need to answer through comment. So today's last question is, what do you understand by nibble? क्या बोला मैंने? What do you understand by nibble? Nibble means NIBBLE. What is nibble? Okay. So that's all for today. I have taken few extra minutes because on Saturday I missed your class. Okay. So I hope today's class, everything what I have discussed, you got it. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And your practical will be going on smoothly, right? I have asked Bisal sir to, means I have already given him instructions what to show you in your practical lab. I hope you will not face any problem with that for that. Okay. So we'll meet again on next Saturday. And don't miss the lab classes, right? Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.